Hello बच्चों, good morning, good afternoon, good evening, whenever you are watching this video. So in last video we have seen mass defect and binding energy, how we can calculate the mass defect and binding energy. तो लास्ट वीडियो में देखा था हमने मास डिफेक्ट इज इक्वल्स टू mass of nucleons minus mass of nucleus. So mass of nucleons and nucleons means proton and neutron. So proton plus neutron का मास उसमें से न्यूक्लियस का मास कर देंगे तो जो एक्स्ट्रा मास डिसअपियर होता है उसको मास डिफेक्ट कहते हैं. ऑल्सो वी स्टडीड इन लास्ट वीडियो बाइंडिंग एनर्जी. सो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू E बराबर एम सी स्क्वेयर. सो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वेयर. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट how much binding energy associated with 1 EMU mass. So generally mass of atom, proton, neutron we used to calculate in AMU. So first we should learn what is AMU. So 1 AMU means atomic mass unit. AMU full form is atomic mass unit, which is having 1.66 into 10 to power minus 27 kg mass. And c is the speed of light, so c is equals to 3 into 10 to power 8 meter per second. Also we should know how much 1 electron volt, how we can convert 1 electron volt into joule. So 1 electron volt is equals to 1.6 into 10 to power minus 19 joule. Both are unit of energy. Generally we have 3 unit of energy. One is joule, one is commercial unit, that is kWh, one is small unit is electron volt. So 1 electron volt is equals to 1.6 into 10 to power minus 19 joule. Also if I'll convert into mega electron volt, then I will multiply by 10 to power 6. So 1 mega electron volt is equals to 1.6 into 10 to power minus 19 into 10 to power 6 joule. So now I have to calculate the binding energy associated with 1 EMU mass. So binding energy is equals to E बराबर mc square and E बराबर mc square and mass is 1.66 into 10 to power minus 27 because mass of 1 EMU into c square 3 into 10 to power 8 raised to power 2 because c square. So this answer will give me in joule क्योंकि मैंने यहाँ पे मास को भी केजी में कन्वर्ट कर लिया है और जो मैंने सी को रखा है वो भी एसआई यूनिट में है. तो बोथ आर इन एसआई यूनिट, सो आंसर विल बी इन एसआई यूनिट. नेक्स्ट थोड़ा कैलकुलेशन किया है. नंबर पावर्स को एक पास में लेके आया हूँ और नंबर्स को एक तरफ लेके आया हूँ. So total will be 1.66 into 9 because 3 to power 2 is 9 and 10 to power minus 27 and 10 to power 8 की power 2, so 10 to power 16. So now we will get this number in joule. Now I have to convert this to mega electron volt. So as we saw 1 mega electron volt is equals to this. So we will divide this value with this number. So once we will calculate this, we will get the answer in mega electron volt. So just we have to divide this number because if this side 1 will be there, then this data will goes down, right? So 1 joule is equals to this, then this many joule is equals to divide by this. So once we will divide these number, total calculation it will give us 931.5 mega electron volt. So 1 EMU mass is associated with 931.5 mega electron volt. Guys, please remember this data because in all the numerical of mass defect we are going to use this data. So now let's say understand one numerical, how we are getting the numerical of this topic. So first क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी. हमें बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करनी है पर न्यूक्लियॉन्स ऑफ 20 कैल्शियम 40. So 20 calcium 40, he has given mass of 39.96
Generally, this type of data he will give in unit of AMU or U. Both are same. So this data is 39.96 is what? Mass of nucleus. And he has given mass of neutron plus mass of proton. So neutron mass he has given this and mass of proton this. We have to calculate binding energy per nucleons. So before calculating binding energy, we should calculate the mass defect. So first we can calculate the mass defect. Mass defect is equals to mass of proton plus neutron. So total mass of nucleons minus mass of nucleus. So mass of proton, how many proton was there in 2040 calcium? 20 proton, 20 neutron, and we will multiply the mass. Then we will get this data, and minus we will do the mass of nucleus. So when we will calculate this, we will get 0.34 AMU mass. But now what? How we can convert into mega electron volt? So in last example we saw 1 AMU is equals to 931.5 mega electron volt. In last numerical we saw. So एक AMU में इतना एनर्जी है तो इतने AMU मल्टीप्लाई बाय दिस. सो बाइंडिंग एनर्जी इसके आफ्टर मल्टीप्लाइंग ये हो जाएगी. सो टोटल बाइंडिंग एनर्जी विल बी दिस. बट हमें तो कैलकुलेट करनी थी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, तो हमें न्यूक्लियॉन्स पता करने पड़ेंगे टोटल कितने हैं. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने थे टोटल? 40. सो डिवाइड बाय 40. सो 7.91 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वी विल गेट. सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन